चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. So displacement in terms of time is given. He is telling the velocity when the acceleration is zero. Velocity when acceleration is zero. Sir, is it negative? Hmm. Sir, -9. Yes. -9. मानो क्या हो? एक्सेलरेशन के लिए आपको 2 times डिफरेंशिएट करने का टू गेट एक्सेलरेशन, राइट? नो सॉल्व. Pranav on the video. Sir, I'm getting velocity as 0. Why velocity is 0? So I'm getting 2. क्या है यार? देखो डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम इज गिवन, राइट? ही इज सेइंग टू फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी फाइंड करने का, बट एक्सेलरेशन व्हेन जीरो कंडीशन में. फर्स्ट ट्राई टू फाइंड एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी कैसे आएगा? ds/dt. सो कितना? 3t² -12t + 3. सिमिलरली एक्सेलरेशन dv/dt. So 60 - 12. Okay. Now acceleration is 0 करके time find करो. 2. Acceleration 0. So Yeah, zero, got it. t equal 2 seconds. Now he's telling in that condition में he's telling to find velocity. So substitute this in this. So कितना? So 4 12 -24 + 3. Yeah, sir, -9. Yeah. That's 9. You got Pranav? Yes, sir, I got it. Yes. So next. Now understand direction of motion. एक छोटा सा concept है direction of motion. Okay. Suppose मान लो the particle, I'll give 3 things: s equal to +10 meters, s equal to 0 meters, s equal to -10 meters. You tell me when is the particle moving in negative x direction? Here, here, or here? Which case में the particle is moving in the negative x direction? Tell me. So a concept समझो. Tell me. Which In the right, which one? -10. -10. Yours, Trisha? Sir, what? Which case में the particle is in x direction, negative x direction? Here, here, or here? Sir, +10. +10. Okay, Pranav, एक ही बाकी है और option. 0. You want to go 0? So -10. -10. But wrong. You have to understand one thing is displacement can never give the direction of motion. Displacement -10 means, what is the meaning of -10 means? The particle is here, but he can move this direction, he can move this direction, he can stay at rest. Direction of motion is not given by displacement. Direction of motion is given by velocity. Velocity gives the direction of motion. Lago, notebook लिखो. Velocity will give the direction of motion. Okay.
So direction of motion always given by sometimes question twist करेगा. Understand displacement से we cannot tell direction of motion. मतलब suppose मान लो v is equal to minus 10 meters per second. That means particle is moving in which direction? Negative 10 meters per second इस तरफ जा रहा है. If it is plus 10 means it is going to the positive direction. Okay, मतलब उधर से वो positive direction में भाग रहा है. v is 0 means he is at rest. So direction of motion is given by velocity only, not displacement. Okay. चलो एक क्वेश्चन क्या करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा. सपोज मान लो गिवन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन करो. t cube minus 6t square plus 9t is given to you. He is telling first one, find velocity, find the time when the body is at rest. Find करो. Find the time when the body is at rest. Sir, body is at rest means velocity is 0, right? That is compulsory. Body at rest means velocity is 0, not displacement. आपका कैमरा नॉट वर्किंग है प्रणव? Sir, it's a software problem, so it'll get fixed tomorrow. Okay. Sir, 3 and 1. Yes. Yes, sir. माना आ गया. Yeah, sir, you get 3 and 1, yeah. 3 and 1. Okay. Now करो. Same question में find the time when the body is moving in the negative x direction. Negative direction बोल के लिखो. Find the time when the body is moving in negative direction. अभी क्या करेगा? So then it will be 1. No, wrong. Sir, it will be the same, no? Why? Find the time when the body is at first question में क्या है? Find the time when the body is at rest. He is running. कौन सा time Oh, में you said body is at rest? velocity is -1. Answer you telling, huh? No, sir. Sir, Tell yeah. the question again once. Find the time when the body is moving in negative direction. So 3. When the body, huh? 3. No. Why 3? So if you substitute 3 in the distance, it's negative. So नहीं, negative. टाइम 3 बोल के आपको मालूम है 3 seconds में negative, ऐसा नहीं है. Find the time at which the body is moving in the negative direction. It can be बीच में also, right? Anywhere. 1 and 3 के बीच में also, right? Because we don't know. So आपको understand करने का जिसका direction of motion इधर ही concept आएगा. Okay. Find the time when the body is moving in negative direction. Is it time belongs to 1,3? 1,3 ऐसा नहीं. That is a rest है ना? 1,3 में rest है ना object before you find, right? Time. Okay. Body is moving in negative x direction means velocity कितना है पहले? Tell me. 3t square minus 12t plus 9, right? Okay. Plus 4. Body is moving in negative x direction. Negative direction means आपको understand करने का velocity is less than 0, right? Because direction of motion is given by velocity only, not displacement. Okay. Now 3t square minus 12t plus 9 is less than 0. Okay. Now इसको solve करो and find the value of t. This is called inequality. आपको splitting middle term क्या था, कितना आया ये वाला before you done? T minus 3, T minus 1. T minus 1 into T minus 3 is less than 0. Okay. This is called inequality. Inequality आपको maths में एक छोटा सा concept आएगा. Inequalities को कैसे solve करेगा? We should not, this is different, that is different. Equal to 0 वाला different है. 0 greater than 0 वाला different है. Okay. Inequalities को कैसे solve करेगा देखो. First नंबर लाइन में आपको अंडरस्टैंड करने का. मान लो फर्स्ट इनिशियली इट इज इक्वल 0, देन टी वैल्यू कितना होगा? इफ इट इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द टी 1 वैल्यू? and 3. 1 and 3. देखो 1 इधर है, 3 इधर है, राइट? 1 and 3. फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करने सीखो, कभी भी इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ वी हैव टू सी which interval it is satisfying. This equation is satisfying. So Okay. the middle one, 1,3, right? आपको 1 लगाओ, 1 लगाए तो कुछ नहीं होगा ना.
जीरो हो जाएगा. Where Because zero is that less than zero. in open, हाँ. not closed. You tell me 1 and 3 के बीच में 2 लगाओ. 2 minus 1 is 1 into 2 minus 3 is minus 1. So minus 1 negative value is less than 0. True or false? True, right? That means this interval is true. Okay. Now 3 greater than 3 देखो, greater than 3. 4 minus 1 is 3 and 4 minus 1 is 1. So 3 into 1 3. 3 is less than 0 means no. So A वाला satisfy नहीं होगा. That means I can tell answer is T is greater than 1 less than 3. This is the answer. इस interval में the body is going in negative direction. Greater than this is, इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? T is greater than 1 less than 3. समझ में आ रहा है? ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन करेंगे. बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ मोशन यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा एंड टेल द आंसर्स. चलो डन. चलो हाँ ये करो. Velocity is given in terms of time. Okay. Find the time interval for which the particle retards. Particle retards. मतलब acceleration is negative, right? Okay. Here understand. ठीक है, first try करो. चलो. So T, when we displace it becomes 1, right? T को differentiate किया तो 1. Sir, Interval Sir, आएगा. हाँ. like the curve bracket, negative infinity, नहीं comma, T is greater than ओ नहीं वो by मैथ्स 2. का रेंज डोमेन वो सब छोड़ो. आपको टाइम T is का ग्रेड lesser than 1 minus 1 by 2. T is less than minus 1 ना. टाइम Minus नेगेटिव 1 होगा by कभी. 2. T is less than 1 by 2. हाँ. आंसर Minus 1 by 2. नो रॉन्ग. So it's like minus infinity is less than T. Sir, T is less minus than 1 by 2. infinity to minus to 1 by स्कूल 2. में डोमेन्स रेंज चैप्टर हो रहा है. Yes, sir. Because of the But- finished. हाँ दैट्स व्हाई इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बोल रहे हैं. वो सब नहीं, नॉर्मली बोलो. देखो हियर So अंडरस्टैंड वन minus थिंग. infinity to 1 by 2. Okay. See, particle going in negative acceleration नहीं बोला ना. He is not telling that particle is going in negative direction वगैरह. But देखो particle retards बोला ना. That means you tell me velocity and acceleration is opposite direction or same direction? Tell me. Retards, particle retards means velocity of the particle and acceleration will be in opposite direction or same direction? Same direction. सेम डायरेक्शन है तो वो पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जाएगा, रिटार्ड्स नहीं होगा. ओके. पार्टिकल गेटिंग रिटार्ड्स मींस क्या है? स्लो होता जा रहा है. मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? दैट मींस आई कैन राइट दैट लाइक दिस. एक्सेलरेशन and velocity, since they are opposite direction, if you multiply it is less than 0 or not? Acceleration velocity is less than 0 or not? Because acceleration is opposite direction to that of velocity. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आएगा आंसर, राइट? देता करेक्ट में. हाँ. नाउ एक्सेलरेशन कितना है फ्रॉम दिस? टेल मी हाउ मच यू गॉट एक्सेलरेशन. 2t Sir, minus 2t 1. minus 1 into velocity कितना है? t square minus t is less than 0. So why A into V? but that only. Body is getting retards means meaning क्या है? Suppose particle is going like this, उसका But its acceleration किस speed तरह is फैक्टर है? decreasing. हाँ? It's the acceleration going in negative. नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? मतलब इफ आई मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव. So that depends if velocity is positive or negative. कुछ भी होने दो. अब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट होगा ना. Oh. हाँ. सो
Now देखो, I take common t square minus t में t कॉमन ले रहा हूँ, so क्या होगा 2t minus 1 into t minus 1 less than 0. देखो t is always positive, not t is positive, time is always positive. That You can means cut it out. Yeah. I can tell 2t minus 1 into t minus 1 is less than 0. Now solve and tell the equation number line में. This is called inequality, right? Now solve and tell. Here 1 by 2 1, right? First equal to 0 करके I got 1 by 2 and 1. Now interval find करो. Which one is satisfying? T is greater than 1 by 2 1 by is 2 less than 3. 1. Yes, correct. T is greater than 1 by 2 less than 1 second. इस इंटरवल में बॉडी इज गेटिंग रिटार्ड्स. देखो ये सब कुछ आपको ये किधर यूज होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किधर यूज होगा लाइफ में अभी भी? टेल मी एनीवेयर इट इज यूजफुल. Sir, if While you want to driving. be a driver in the future. ड्राइवर. ओके, ड्राइवर में आप डेली देखते हैं क्या इक्वेशन ये वाला? टेल मी So like in your head, you can get an idea. किधर किधर यूज होगा इक्वेशन? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अभी ये इक्वेशन डिफरेंशिएशन किधर यूज होगा अभी? I don't- IIT-JEE. हाँ Sir, IIT-JEE. देखो कैसे बोलते हो, सपोज स्पेस में काम कर रहे, सपोज स्पेस में यू आर डूइंग, सपोज ओके यू नो रॉकेट को भेजेगा, नहीं तो कुछ भी यू नो यू विल सेंड टू द स्पेस, राइट? उसका इक्वेशन आपको मिल जाएगा, पाथ उसका इक्वेशन आ जाएगा. इफ दैट मीन्स सपोज मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सम कॉम इक्वेशन आएगा टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा डिपेंड्स कौन सा डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड हो रहा है बोल के आपको इक्वेशन आएगा. देन यू कैन टेल इस टाइम में कितना किलोमीटर्स में योर योर यू नो योर रॉकेट इज देयर, किधर जा रहे हैं, एवरीथिंग वी कैन नो बाय दिस इक्वेशन, वी कैन गेट बाय दिस इक्वेशंस. सो दिस ऑल लिटिल बिट इन हेल्पफुल होगा. ओके चलो नेक्स्ट समय. नाउ विल गो फॉर द इंटीग्रेशन कहानी. वी डन यू नो डिफरेंशिएशन, राइट? थोड़ा इंटीग्रेशन कहानी बिकॉज आगे इंटीग्रेशन आने वाला है. इंटीग्रेशन के लिए आपको समझ में आएगा. टेल में एक्स पावर एन डी एक्स. टेल में व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो. एक्स पावर याद है इंटीग्रेशन देख रहे हैं. इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रेशन आया था तुम. Yeah, sir, I एक्स पावर forgot. एन प्लस 1 बाई Power n plus 1 by n plus 1. हाँ एन प्लस 1 प्लस सी आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट, ये सी इंपॉर्टेंट है. सी इज कांस्टेंट प्लस सी. ओके टेल में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx. X power 4 by 4 plus C. X power 4 plus 4 plus C. This is called indifferent integration. Indefinite में always C will be coming. Okay. Tell me integral 2x dx. 2 बाहर. हाँ 2x square by 2. 2 into x square by 2 plus C. Okay. Now suppose मान लो you have, ठीक है, ये बेसिक तो आता है ना आपको फॉर्मूला वाला. लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ टी आल्सो नो प्रॉब्लम, राइट? यू कैन डू, राइट? 2t स्क्वायर dt. तो 2 बाहर, t क्यूब बाई 3 प्लस c. ओके डिफरेंट इंटीग्रल आता है. डिफरेंट इंटीग्रल्स 1 to 2 x dx. टेल में कैसे करेगा डिफरेंट इंटीग्रल में? x square by 2 minus x square by 2 minus wrong. No, it's x cube by 3 minus x square by 2. शाबाश. wrong. You tell me Krisha. Sir, x square by 2 and then you'll put square. एक्स सी इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा? फर्स्ट एक्स स्क्वायर बाय 2 इज अ नॉर्मल वन, राइट? दिस इंटीग्रेशन यू नो, राइट? दिस लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2. You have to substitute upper limit minus lower limit. So x के जगह में substitute 2. So 2 square is 4. 4 by 2 is 2 minus
लोअर लिमिट x के जगह में 1 लगाओ, 1 square by 2 is 1 by 2, so it is answer is 3 by 2, this is answer. समझ आ रहा है? सो ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा. करो इंटीग्रेशन 2 to 3, ठीक है, स्मॉल 2x क्यूब dx, ठीक है 2x स्क्वायर dx. हाँ बोलो करो. टू एक्स स्क्वायर सर. हाँ 2x स्क्वायर dx. सर 38/3. देखेंगे हम लोग को. So 38/3. गुड. Yeah, so 38/3. आया. सो नो कर सकते हैं ना. चलो now देखो कैसे करेंगे, क्या है, किधर यूज होगा, विल सी. नाउ रिवर्स प्रोसेस. सो टिल नाउ क्या था, displacement, velocity, acceleration. When displacement time is given, you have to differentiate to get velocity. When velocity time is given, you differentiate, you will get acceleration. But now क्या है, reverse way. When acceleration time is given, how to get velocity? We have to do integration. When velocity time is given, how to find displacement? You have to do integration. That is the important thing. समझ में आ रहा है? दिस कहानी इवन ग्राफ्स में भी रिपीट होगा, आगे ग्राफ्स आने वाला है. ग्राफ्स आल्सो विल रिपीट दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, सो अंडरस्टैंड. व्हेन डिस्प्लेसमेंट टाइम, टेल मी डिस्प्लेसमेंट टाइम इज गिवन ds/dt किया तो यू विल गेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टाइम इज गिवन अगेन dv/dt किया तो यू विल गेट एक्सेलरेशन. नाउ व्हेन एक्सेलरेशन टाइम इज गिवन, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, इंटीग्रेट करने का. व्हेन वेलोसिटी टाइम इज गिवन, हाउ टू गेट डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट करने का. ओके, नाउ सी VT ग्राफ, VT का दिया है सपोज मान लो. ओके, सो वी नो दिस वन. देखो आई वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस. देखो वेलोसिटी टाइम इज गिवन, आई वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. रिवर्स वे में जा रहा है, रिवर्स में मैं गया तो इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ओके, वी विल सी हाउ टू डू इंटीग्रेशन. देखो V इज इक्वल टू ds/dt, दिस फॉर्मूला यू नो राइट, ds/dt. मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. V dt और ds is equal to V dt. Now I will integrate both sides. I'll integrate both sides. Okay. Integration dx is how much? Integration of ds is? आता है differentiation of integration of dx कितना होगा? You can think like this. Differentiation integration cancel हो जाएगा. X is answer. X plus C आएगा. Formula है. Integration dx is x. Okay. Integration of ds is s is equal to integral, since time limits are given, t1 to t2 v dt. This is the answer. So whenever displacement is given, whenever velocity time is given, how to find displacement? Simply integrate. So I will do integration v dt. Limits dt का तो t1 to t2 आएगा. Limits are given. When you integrate, Then where will C go? value is Sir, C. C करना पड़ेगा आपको. इंटीग्रेट करने के बाद यू विल पुट C आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन. सी एक काम करो, ऐसा करो, टाइम लिमिट एक बार नहीं दिया तो आपको ऐसे यूज करेंगे. हाँ, सो क्या करेंगे, S इज इक्वल टू इंटीग्रल V dt, राइट. आफ्टर इंटीग्रेटिंग यू पुट C. Okay. So plus or minus? प्लस C करने का, ऑलवेज कांस्टेंट इज ऑलवेज प्लस C. Sir, but then this side there will be a plus C, no? Won't they This get side, no, ऐसा नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज S ओनली, कांस्टेंट नहीं आएगा इसका. ओके, सो एक्चुअली क्या plus C, no sir. So it will be S plus C. That only I'm telling. Suppose मान लो, you tell me this one, tell me integration of 2x plus 3x square dx. Tell me इसका Integration of 2x dx plus integration of 3x. इंटीग्रेट करो कितना होगा, x square by 2
राइट, इसका भी सी आएगा, प्लस सी आएगा, राइट, प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, इसका भी सी आएगा. सो आंसर विल बी 2c नहीं आएगा, ऑल कॉन्स्टेंट मिलके एक ही सी लगाने का. ओके, लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी होने दो, टोटल आंसर विल बी, टोटल राइट So साइड में the प्लस answer सी is आएगा. x square plus x cube, right? आंसर इज हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सी एक ही बार Plus c. डालने का, विच नॉट राइट 10 टाइम्स. ओके, सो ऐसे ही पूरा मिलके आपको एक ही बार लिखने का सी. सो दिस इज वन. और यू कैन गो फॉर लाइक दिस ऑल्सो, समटाइम्स आपको सम बुक्स में ऐसा रह भी रहेगा. देखो, इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, राइट, इधर तक आया ना. हियर t1 टू t2, हियर s1 टू s2, राइट, बिकॉज लिमिट्स आर गिवन, राइट, ds. नो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाए तो s2 माइनस s1 इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 टू t2 v dt. देखो, ये करने से क्या होगा, आपको c का झंझट चला जाएगा. c will not, no need of putting c here because definite integral s2 minus s1, s1 is the initial displacement, like this. So we can go for like this or like this, anything. Okay, so आपको क्या है, whenever velocity time is given, simply integrate to get displacement, integral v dt करो and substitute c, and they will give initial condition to find c, वो यूज करके सॉल्व करने का. Anything you can use. So will this work for acceleration velocity also? हाँ, yes, वो करने वाला है अभी एक्सेलेरेशन. आया जब तक, so that means I can write, हो गया ये वाला जब तक. So one second. One second. So whenever you are here, you are integrating, simply s is equal to integrate v dt plus some constant लगाओ, that's it. Okay. Yes, sir, done. Yes. Now देखो, सपोज मान लो आपको एक्सेलेरेशन टाइम इज गिवन, so what is the formula acceleration time का, a is equal to dv by dt. So we know dv is equal to a dt. आपको इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो क्या होगा, v is equal to इंटीग्रल a dt. मतलब when you integrate, you have to put c करने का, they will give initial conditions, use that initial condition to get c and substitute. Okay, और दूसरा मेथड क्या है, इधर से इंटीग्रल dv is equal to इंटीग्रल a dt. तो Oh. टाइम लिमिट्स t1 टू t2 एंड वेलोसिटी विल बी v1 टू v2. सो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 to t2 a dt. We can use this one also. Okay, anything you can use. Some books में ये सारे आंसर्स देखने समय आपको ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा. फॉलो एक मेथड फॉलो करो, हो जाएगा. When you're substituting here, they'll give initial time is this much, initial velocity is this much, so substitute integration here. Final time t मान लो, velocity कितना है पूछेगा, ऐसा यूज कर सकते हैं. So can this be written reverse, like T2 minus T1 is also equal to V2 by V2 integration of dV by? नहीं, ये वैल्यू दे विल गिव इन टर्म्स ऑफ टाइम में, t स्क्वायर प्लस 2t लाइक दैट, और इंटीग्रेट एंड देन सब्स्टिट्यूट करने का. अंडरस्टूड. ये सब कुछ फार्मूला शीट में आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स के हिसाब से बनाने का फार्मूला शीट. ओके, चलो हो गया. नाउ सो आई विल गिव वन क्वेश्चन, करो देखते हैं, हु विल डू. सपोज a इक्वल टू एक काम करना है, v इज इक्वल टू v is equal to x square plus 2x plus 3. I want acceleration how much? ना करो, क्या करेगा? 2x plus 2. Wrong. चलो एक पूछा.
V is equal to given. I want to find acceleration. See, same question if they given like this, t square plus 2t plus 3, then your answer is 2t plus 2. That is right. Here time and nahi diya, in terms of displacement with diya. We can't use directly A is equal to dv by dt when this is right. When you're doing with respect to time, here displacement we cannot do, right? Then how to tackle this type of problems? So, but what is x? X is displacement. I I am not want given to be d2s by dt square. d2x by dt square. T terms में नहीं है ना. What will do? T terms में नहीं है. So make time in terms of displacement and velocity. हाँ, उसके लिए आपको देखो, उसके लिए एक मेथड है. एक और बेटा. So don't you have to integrate that integrate v and then करो. multiply it into dx by dt? We'll wait करो. ओके देखो ऐसा में कैसे करेंगे. देखो आपको इधर तक कॉपीराइट. चलो हम लोग में ऐसा प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे. आपको एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या था. A इज इक्वल टू dv by dt, right? Is that the basic thing? I want to bring in terms of displacement. It can be x or it can be s also, right? I am multiplying with a ds by ds. It can be x also, dx by dx, dy by dx, anything. Okay, I am multiplying divided by ds. Now tell me what is ds by dt is called as Velocity. velocity. So velocity into dv by ds. This is a formula, very important formula. बहुत बार आपको हर पेपर में आएगा. When your exam is there, definitely this type of question is coming. So whenever displacement terms में दिया acceleration, how to get velocity into dv by ds. मतलब आपको velocity तो same रखने का and differentiate करके multiply करने का. So answer will be how much here? A is equal to v के जगह में same thing, x square plus 2x plus 3 into dv by ds. With respect to x we can do, right? So 2x plus 2 is answer. So formula लिखो, very important, v into dv by ds. This हमेशा 100% question will be coming in your exams. Whenever they keep this kinematics, definitely this question they will give. Okay. So that's therefore I can write like this notebook. A is equal to v into dv by ds. The formula. It can be x also, it can be y also, it can be z also. Displacement, s is displacement. Okay. चलो तो इसका बेसिस में थोड़ा क्वेश्चंस करके जेई मेंस क्वेश्चंस भी करने वाला है, भर के करने वाला है. वो लोग डायरेक्ट नहीं देगा, थोड़ा घुमा के देगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट. ओके चलो हाँ करो, आराम से करो एंड टेल द आंसर. So the given acceleration in terms of time is given, and at t equal to 1 second, the displacement is this much, velocity is this much. The given at time t equal to 1. Calculate the displacement and velocity at t equal to 2 seconds में चाहिए. So मतलब reverse में जा रहे हैं ना. Acceleration is given, we have to find displacement and velocity. Not right. Any method you can use, solve करो. So what's the integration of phi 0, right? No, phi will be coming, phi dx रहेगा बाजू में और dt रहेगा. So phi will be coming outside, integration dt is t, phi t. So the integration of phi is phi t.
देखो कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन विद नंबर 5 नहीं रहेगा, बाजू में dt कंपल्सरी. ओके, सो 5 विल बी कमिंग आउटसाइड. 5 का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t 5t. Sir, is it plus or minus? Like, you'll Final answer. substitute the no sir. You'll substitute the above integration. Like you'll substitute 2 in the equation and then you'll minus it with 1, or sir integration only. अच्छा नहीं है. Sir, देखो ठीक Sir, है. wait, sir, 1 minute, sir. I'll solve. हाँ कर कर Sir, it's sir, I just have integration now. कर फाइनल आंसर बोलो. Sir, आंसर आ गया. sir 8 and 16. 8 and 16. okay. Velocity is 8. Sir, velocity, second velocity is 8. Second displacement is 16. Yeah, like 15.6 आ रहा है. It is 15.6. Okay, 16 बोल रहा है. ठीक है. Good. Sir, I'm getting velocity as 10. Wrong. देखो, they given acceleration in terms of time. How to find velocity? Tell me. By integrating it. V is equal to integral a dt, right? Okay, लगो इंटीग्रेशन कितना होगा? T to the power of 4 by 4 minus Okay. 3t cube. Oh, minus t cube. Minus t cube plus 5t, Minus right? t cube plus 5t plus c. Plus c. Yeah. Okay. Then क्या किया? Then I took LCM. एलसीएम छोड़ो, आपको c का वैल्यू फाइंड करने का, राइट? Yeah, sir, I know that's equal to. I know that equal to 8.3 instead of 6.25. Oh, this velocity is given, right? 6.25
at t equal 1 second, I want to find, right? Yeah, sir. Yeah, sir. You'll get 8. You'll get 8. You'll get 8. Yeah. Yes. So if you solve, c value aayega, some c value you get as 2. Now substitute this 2 in this, v is equal to t square t power 4 by 4 minus t cube plus 5t plus 2. That is the advantage of having c. C is very important. Okay, and then if I substitute t equal to 2 second, v equal to 8 aayega. Similarly, displacement also same thing. अगर इसको आपको integrate किया तो you'll get displacement and put c. Again condition use करो, you'll get the c value. Substitute, you'll get as exact answer Yeah, क्या sir, है, got it. 15.6 meters. Yeah, sir. Got it. Understood. Sir, हाँ, I did displacement directly. displacement क्या किया? So Like velocity is integration. equal to displacement by time. Okay, but that we cannot say that, right? Oh, conditions are given, right? So it can change. Initial conditions are given. That's Sir, why. but then you'll have V2 and D2 and you'll have the specific time at that point. हाँ, but थोड़ा that's why 15.6 आया और 16 आया, थोड़ा डेसिमल में थोड़ा तेड़ा आया. ओके, चलो नेक्स्ट में करो. करो. Sir, wait, sir, for displacement, then how do I find? Which formula do I डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे? v s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt, राइट? v का ये लगाने का कौन सा v आ गया ना, ये वाला विदाउट c वाला, वेलोसिटी है ना, वो यूज करो. इंटीग्रेट करने के बाद c लगाओ. एंड कंडीशन क्या है? at 1 equal t equal 1 second, displacement is how much? 8.8. You use that 8.3 to get the value of c and substitute, you will get the answer. Like same kahani always go for the same method. Okay, ये करो. So we should find v with respect to t. First velocity find karo, वो तो easy, right? And initial conditions are given. We have to find velocity only. Initial conditions are given to you. Initial condition किस लिए दिएगा? To find c. Sir, we're supposed to find V2. v2 only. v1 is initial condition always. You can Sir, use how that do method I also. find the second time? That will answer karo. Second time is t only we should take, not this one 0 to t. So like you'll get v with respect of time. Then what should we Time. do? He is asking velocity in the function of time only. Yes, you'll get it as 3t square plus 6t plus c. 3t square plus 3t square plus 6t plus c. no c find करने का, right? Okay, got it. Yeah, okay, okay. Sir, velocity will be in terms of time, no? Velocity in C terms will of be time 2 also, only. displacement also in terms of time. Position is nothing but displacement, right? दोनों Okay. चाहिए. हाँ. So, but c will also be 2 then. C substitute करो then. So Yeah, v got how much you got finally?
So 2. What answer? Yeah, displacement. अरे कैसा 2 Sir, I होएगा? got V as t square by 2 plus 2. T square by 2 plus 2. No wrong. Same method follow करो. How to Sir- get? हाँ. Sir, velocity is 3t square plus 6t plus 2. हाँ correct. Velocity. देखो. You tell me. Pranav, what is the method you done? Tell me. Velocity find किया. Integral a dt. Yeah. तो कितना होगा a का क्या तो? Yeah, sir. I told that only 3t square plus 6t plus 2. But like C, but C is 2. That is the answer is right. V is right. 3t square plus 6t plus 2. But Oh, displacement we then are saying. in time. Oh, then Ah. displacement is t cube plus 3t square plus 2. Plus 2. आपको कितना है डिस्प्लेसमेंट? 2 के बाद रहेगा कुछ Meters. नहीं, वो रॉन्ग है थोड़ा. लास्ट वन रॉन्ग. तो चेक करो क्या मिस्टेक है. Sir? वेलोसिटी यू गॉट एज 2t 3t स्क्वायर. Oh, plus 2t. 2t is आंसर. Sir, how do you find C? देखो वेलोसिटी तो आ गया, इधर तक आया, ये आया. डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? टेल में. डिस्प्लेसमेंट विल बी v is s is equal to integral v dt, right? तो Sir, कितना होगा? हाँ plus C. प्लस सी जनरली कैसे करेंगे? व्हेन यू इंटीग्रेट के बाद लास्ट में सी लगाओ. So C Okay. will be the answer. सी विल बी द. Sir, C will be in the answer now. नहीं ऐसे नहीं है. देखो ये समझ में आया? ये सब समझ में आया, राइट? हाँ. नो देखो इंटीग्रेट कितना आएगा? टेल में. टी क्यूब 3 t cube plus 3t 3t square स्क्वायर plus प्लस t 2t प्लस C. सी, राइट? बिकॉज इंटीग्रेट करने के बाद इंडिफरेंट इंटीग्रल है ना, दैट्स व्हाई वी पुट सी, राइट? हाँ. Sir, नो what do देखो I do with C? सी वी हैव टू फाइंड हियर. कैसे किया? इनिशियल कंडीशन क्या दिया? टेल में. Find the he has given any initial condition. The particle starts from origin. मतलब displacement is how much? Initial origin में displacement means 0. Time कितना है? 0. सबसे करो. 0 0. is equal to c. C is 0, right? Now substitute c is 0 in this. So क्या होगा? S is equal to t cube plus 3t square plus 2t is answer. Okay. Or if you want to do normal integration method में, you can do integration method में. Okay. So v is equal to ds by dt, right? So ds is equal to v dt. Integrate. Now tell me initial condition time t equal 0 में time का लिमिट लगाने का 0 and displacement कितना है? Initially it is 0. In time t में इसकी displacement is s. Find करने का ऐसे भी आ जाएगा. If you integrate one. एनी मेथड यू कैन फॉलो, वन मेथड फॉलो कर लो, हो जाएगा. ओके. सो समटाइम्स आपको बुक्स में पीछे में आंसर्स ऐसे दिया तो भी टेंशन नहीं लेने का. अरे समथिंग ये सेम मेथड, एनी मेथड यू कैन डू. ओके. चलो करो. velocity they given as 10 plus 2t plus 3t square. He's asking all the questions करो. Displacement is asking, reverse में जा रहा है ना. Displacement is asking at time t equal 1 second if it is given that displacement at 20 meters is t equal 0. So is the displacement 32? देखेंगे, अलग भी करने दो.
Yeah, sir. Displacement is 32. Okay. And acceleration find करो. So for acceleration, we can directly do differentiation, right? Yes. Sir, acceleration is 60 plus 2. Yes. Hi, Krisha. Purvi. Sir, 1 second, I'm doing acceleration. Yes, sir. आया ना सब लोग. Yeah, thanks. Okay, so थोड़ा आपको सेनगेज में बैक साइड एक्सरसाइज क्वेश्चंस में धीरे धीरे थोड़ा सॉल्व करता जाओ. जो जो टॉपिक्स हो रहे हैं मिनिमम करो. इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, चलो. नाउ विल गो फॉर द जेई मेंस क्वेश्चंस. बढ़िया. ये लोग नहीं नॉर्मल नहीं नहीं करेगा ना, वो लोग इधर उधर उधर देगा ना, करने वाला है. ओके, ट्राई. चलो, नो करो. Relation between time, distance, the given, the retardation of the motion. मतलब simply is saying to find retardation. Find करो. Only options so that you will understand what to do. बोल के. So can't we find v by doing dx by dt? करो. anything कर दो. dx per dt करो, कुछ भी करो. m an inner constant, right? So in this equation, should we make everything in terms of t? Like, should we take the x and make it in terms of t? Options are given. And displacement is a function of time only. Velocity is also function of time.
Sir, in this equation, can we differentiate on both sides? ओके देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज वी वांट व्हाट वी वांट फाइनली रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन चाहिए ना एक्सेलरेशन के लिए ठीक है डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दो बार करने का कुछ तो करने का राइट ठीक है सो वी आर डिफरेंशिएटिंग d by dt of and both sides with respect to time we are differentiating right so that I can get velocity right here is equal to m is constant okay what is d by dt of 2x square x square plus n times of d by dt of x okay now tell me differentiation of t is 1 is equal to m into now tell me anybody d by dt of x square is how much with respect Sir, to time it's 2x into dx by dt. very good super okay because x is a function of time velocity is also function of time that's why kabhi bhi whenever they are function of time we should write like this normal x square ka differentiation is 2x into dx by dt karne ka okay plus n into इधर क्या होगा dx by dt right okay now what is dx by dt is called dx by dt is called as rate of change of displacement is called as Velocity. velocity so क्या है 1 is equal to m into 2x into v plus n into v इधर तक आया अनुष्ठ क्लियर ओके नाउ v को कॉमन ले लो बिकॉज आई वांट इन टर्म्स ऑफ v में v कॉमन ले लो कितना होगा 2mx प्लस n इज इक्वल टू 1 by v लेके आ रहा हूँ 1 by v इज इक्वल टू 2mx प्लस n इधर तक आया अनुष्ठ कृष्णा इधर तक ओके नाउ आपको एक्सेलरेशन चाहिए देखो वेलोसिटी आ रहा है बट आई वांट रिटार्डेशन राइट एक्सेलरेशन चाहिए इसको फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे कुछ तो आएगा राइट सो टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by v टेल मी 1 by v विद रिस्पेक्ट टाइम वी आर डूइंग कितना होगा एनीबॉडी 1 by x का डिफरेंशिएशन 1 क्या by होगा v square. नो Minus 1 by minus 1 Oh, by minus v 1. square into velocity in terms of time right dv by dt is equal to 2m is constant बाहर आ जाएगा dx by dt and constant का difference is 0 right so therefore इधर dx by dt again v right again v into v square is v cube so therefore dv by dt is equal to minus उधर फेंकूंगा minus 2m v cube okay this is nothing but acceleration only Yeah. but I want retardation So 2m v cube. 2m v cube देगा जे मेंस क्वेश्चन में इधर उधर उधर देगा सीधा साधा नहीं देगा दैट्स व्हाई दे विल टेल द टफेस्ट एग्जाम इज दैट ओनली ओके सो प्रैक्टिस से पूरा आ जाएगा आपको